Hi guys, so in today's video I'm going to be sharing with you some monsoon related hacks that you can use while traveling out in the rains. Whether you're going to office, to school or to college, you can use all of these hacks and you can hear the lightning. Oh god, it's gonna rain so heavily. I think the timing for this video is so apt because these hacks are gonna come really handy for you guys. So while you travel out in the rains, बारिश में travel करना बहुत मुश्किल होता है. I know because 7 years I used to travel in the rains to college, train में वो भी. And अपने आप को सूखा रखना तो एक challenge होता ही है, but अपने आप को clean रखना भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा challenge है. Because umbrella से या raincoat से तो आप अपनी body को और अपने कपड़ों को protect कर सकते हो from getting wet, but the main challenge is to protect your feet, to protect your shoes from getting wet and from getting dirty. So the first hack here is to skip those chappals, to skip those sandals and also those sneakers and sports shoes and whatever shoes that you're wearing. Crocs भी छोड़ दो, मैं तो बोलती हूँ. Don't wear any of this and just wear gumboots because gumboots are the only thing that will keep you dry, perfectly dry. Even Crocs have these small holes inside them, तो उसमें से भी ना पानी अंदर जाता है और आपके पैर जो है वो गीले हो जाते हैं. एंड इट्स नॉट रियली अ गुड थिंग, अ हेल्दी थिंग टू कीप योर फीट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज उससे काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं आपके पैरों में, आपको सर्दी भी लग सकती है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप योर फीट ड्राई. सो skip those Crocs and start wearing gumboots. So I'm gonna list a couple of good quality affordable gumboots in the description box below. You can check that out. Moving on to point number 2, that is after you have traveled, after आप पहुँच जाते हो wherever you wanted to reach, whether it's the office, your college, your school, wherever, what is the second step that you can do? Well, monsoon में अगर आपके पैर गीले हो गए तो भी they're gonna stink. अगर आपके पैर गीले नहीं हुए, if you've been wearing gumboots, then gumboots की जो material होता है that doesn't really allow your feet to breathe, so there are chances that your feet might stink then as well. So I have this amazing product that's going to help to cover up that odor. This is Dr. Foot Natural Foot and Shoe Deodorant Spray. इसको यूज़ करने के ना दो मेजर बेनिफिट्स है. फर्स्टली द स्मेल, द बैड ओडर दैट कम्स आउट ऑफ योर फीट और आउट ऑफ योर शूज़, you can like get rid of that immediately completely with the help of this. And secondly, आपके पैर में जो बैक्टीरिया भी रह जाएगा because your feet is wet or because your feet is dirty, उसको भी ये पूरा completely kill कर देता है. So it has two benefits. It kills the bacteria and avoids any kind of infections on your feet, and it also kills the odor and it leaves your feet smelling really nice. This contains lemongrass essential oil and tea tree oil, and उससे आपके feet ना काफ़ी fresh smell करेंगे. And you can spray this on your feet as well as on your shoes. तो अगर आपके shoes भी smell कर रहे हैं, then you can spray it on them as well, and it's gonna kill all of that odor and leave them feeling all fresh and nice. इसका बेस्ट पार्ट ये है दैट यू कैन यूज़ दिस ऑन एन एवरीडे बेसिस, वंस ट्वाइस थ्राइस, जितनी भी बार आपको ये यूज़ करना है दिन में आप कर सकते हो बिकॉज इसमें काफ़ी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं एंड दिस इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स. सो आई लव कैरिंग दिस ऑन इन माई बैग वाइल ट्रैवलिंग, एंड एवरी सिंगल टाइम दैट आई रीच द डेस्टिनेशन I take this out and spray this all over my shoes and on my feet and leave them feeling all fresh. Apart from this, if you travel out every day, whether it's the rainy season or not, like especially rainy season में तो ये होता ही है कि आपके जो पैर है वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं. There's a lot of dirt that gets accumulated like on your feet, like on the sole of your feet, and काफ़ी cracked heels की problem हो जाती है, rough skin, dead skin, all of that happens. And the problem of corn is very common especially in the rainy season because corn happens because of a lot of dead skin accumulation in that area which is not removed timely, so it forms into a corn and corns can be very painful. So you want to avoid all of that and take care of your feet on a regular basis, say once every single week. And इसके लिए ना आपको एक foot pedicure करना चाहिए अपने घर पे ही. You don't have to like spend a lot of money on this. You don't have to like hire someone, call someone home or go to a salon. आप घर पे ही इसको कर सकते हो very effectively, and I'm gonna show you how. So firstly, you can use this Epsom salt peppermint foot soak. This is by Dr. Foot and it's in the variant peppermint and it smells really nice and fresh. इसमें ना ऐसे एप्सम सॉल्ट के क्रिस्टल्स है जिसको आपको एक बकेट में डालना है.
Make sure that you've used hot water in your bucket and let the Epsom salt soak into the water for at least like 10 minutes before you soak your feet into the water. जब तक पानी काफ़ी lukewarm सा भी हो जाएगा, so it will be like perfect to like put your feet inside, and then you want to soak your feet in for at least like 15 minutes. It's gonna help to release all of that tiredness, all of that tension, all of that pain from your feet and give you a complete relaxing experience. And moreover, it also helps to soak out all the bacteria from your feet, leaving your feet very clean. This foot soap contains magnesium sulfate, eucalyptus oil, rosemary oil, tea tree oil, lavender oil, peppermint oils, and it smells really nice. Like when you open this, you feel like you're in a spa or something. That is how nice and relaxing and soothing it smells. And the overall experience of just like using this as a foot soak, soaking your feet into water is really good. It feels like a spa when you do that. तो इससे ना ऑलरेडी आपका आधा काम हो जाता है. ऑलरेडी आपके जो टायर्ड फीट है वो इतने रिलैक्स हो जाते हैं लाइक एट द एंड ऑफ द वीक, एंड काफ़ी क्लीन भी हो जाते हैं. एंड द सेकेंड स्टेप इज़ देन टू रिमूव द डेड स्किन ऑफ योर फीट. And this is the best foot scrub that I've ever used. I have tried so many foot scrubs in the market and they are all so harsh for the skin. Like I know that पैरों की जो skin होती है वो थोड़ी rough होती है, थोड़ी hard होती है than the rest of our skin, but that doesn't mean you treat it with harsh products. आपको फिर भी gentle products ही use करने चाहिए on any part of your body, and this scrub is very gentle. So this is Dr. Foot Scrub. तो ये काफ़ी नॉन ड्राइंग फुट स्क्रब है. ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है. इनफैक्ट एक्सफोलिएशन के साथ साथ ये आपके स्किन को नरिश भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है एंड काफ़ी स्मूथ बना देता है. सो दिस हेल्प्स टू रिमूव ऑल द डेड स्किन अवे, ऑल द ड्राई स्किन अवे फ्रॉम योर फीट, लीविंग योर फीट very smooth and very soft. And you need to massage this not just on your feet, like not just on the sole of your feet, but also on the upper part of your feet, also on the cuticles, because ये सब areas पे भी काफ़ी सारी dead skin होती है. And इससे एक्सफोलिएशन के साथ साथ जो सन टैनिंग है, जो पिगमेंटेशन है, वो भी लाइटन हो जाता है इफ़ यू यूज़ दिस एवरी सिंगल वीक. So this has a lot of benefits and I highly recommend you use a foot scrub at least once a week, especially during seasons like winters and monsoon, जब आपके feet बहुत ज़्यादा dry और बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं. You really need to scrub your feet every single week. Pedicures ना भी करवाओ तो भी it's okay, but ऐसा कुछ use कर लो. You can use it in the shower or you can use it maybe on a Sunday on your holiday as a relaxing self pamper session. Like you really need to give this to yourself. एंड इसमें भी ना यूकेलिप्टस ऑयल, आमंड ऑयल, टी ट्री ऑयल जैसे बहुत नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स है. सो वाइल एक्सफोलिएटिंग योर स्किन इट्स ऑल्सो गोना नरिश योर स्किन एट द सेम टाइम. एंड आफ्टर ऑल दैट क्लीनिंग, ऑल दैट एक्सफोलिएशन, you really need to hydrate, you really need to moisturize your skin, and for that this is like the best product. This is Dr. Foot Repair Cream. And as the name says, this doesn't just moisturize your skin, but it also helps to repair your skin on the feet. तो ये जो आपकी रफ़ एंड ड्राई स्किन होती है उसको काफ़ी स्मूदन आउट कर देता है. जो हार्ड स्किन होती है, रफ़ स्किन होती है, उसको काफ़ी लूजन आउट कर देता है. एंड ओवरऑल इट मेक्स द अपीयरेंस एंड द टच ऑफ योर फीट रियली नाइस. आप देख सकते हो कि इसका जो टेक्स्चर है ये कितना थिक है. एंड वंस आई अप्लाई दिस, लाइक इतना कम मैंने अप्लाई किया, बट इन स्पाइट ऑफ दैट जस्ट लुक एट इट, लुक एट हाउ रिच इट इज़. एंड अ लिटिल बिट गोज़ अ लॉन्ग वे. आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लेके आपको उसको मसाज करना है फीट को, एंड इट इज़ सो नरिशिंग. लाइक यू कैन सी द डिफरेंस. बहुत रिच, बहुत थिक एंड बहुत ज़्यादा नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग है ये फुट रिपेयर क्रीम. एंड इट्स अ मस्ट टू बी अप्लाइड स्पेशली आफ्टर यू स्क्रब योर फीट, और स्पेशली आफ्टर लाइक यू thoroughly cleanse your feet. ये लगाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप चाहो तो you can also use this on an everyday basis, like at night after you wash your feet, before you go to bed, just apply this on your feet, and overnight ये आपके feet को काफ़ी रिपेयर कर देगा. जो cracked heels है, जो dry and rough heels है, उसको काफ़ी smoothen out कर देगा. आपके overall feet को काफ़ी soft बना देगा, काफ़ी smooth बना देगा, and जो appearance है वो भी काफ़ी enhance कर देगा. एक glow आ जाएगा आपकी feet पे. अगर आप daily
ये यूज़ करोगे आपके फीट को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको ओकेजनली एवरी वीक भी यूज़ कर सकते हो इन योर सेल्फ पैम्पर फुट सेशंस। यू कैन यूज़ इट एनी हाउ। एंड इसमें भी ना लेमन ग्रास ऑयल, टी ट्री ऑयल, पेपरमेंट ऑयल और वाइटामिन ई ऑयल है। सो इट्स गॉट ऑल ऑफ दोज रियली नाइस स्मेलिंग नरिशिंग ऑयल्स, एंड वाइटामिन ई भी है जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है स्किन के लिए। It smells really nice when you apply. The smell of, in fact, all of these products is like very soothing and very calming on the mind, and आपको literally feel होगा आप spa में हो, जैसे कि आप खुद spa करवा रहे हो. That is how good it feels. And all of these products are really affordable. They're all priced below rupees 300. In fact, some of them retail for like 250 rupees. And ये तो MRP है. If you check out Dr. Food's website or maybe Amazon, Nykaa, Flipkart, ये सब websites अगर आप check करो, then you will definitely get some discounts because they keep running some really good offers and discounts. So at such an affordable price, you can get like weekly foot spas done at home. You don't need to like visit an expensive salon and like dig a hole inside your pocket every single week to get a foot spa. At just the cost of like 1 or 2 foot spas, you can get a multiple of them, at least like 15-20 of them at home with the help of these products. So I highly recommend you guys check out these Dr. Foot care products. And honestly, my absolute favorite product out of all of these has to be the natural foot and shoe deodorant spray by Dr. Foot, because this comes really handy for me even while I travel. I carry this on an everyday basis wherever I go, and it just keeps my feet smelling all nice and fresh, avoids that odor. Buy one of these and keep this in your bag whenever you travel. ये बहुत आपको काम आने वाला है, trust me on this. सारे purchase links आपको description box में मिल जाएंगे, so you can check that out. So that was my video on a couple of monsoon hacks and how to take care of your feet during the monsoon season. I hope you guys found this video helpful. If you did, please hit the like button. Subscribe to my channel if you're new here. Follow me on Instagram. And yeah, with that, it's a wrap for now. I shall see you in my next video.